Are we live? हाँ, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं till a few viewers come. Jahangir Zahoor, how are you, brother? Hello Jahangir Zahoor. Hope you're doing well. So we're gonna be waiting for some people to join, and Mishail's here. Hi Mishail. Maham's here. Hi Maham. How are you guys doing? How's everyone? Honda Sales has joined. Alright, hello my good friends. Anyways, so सबसे पहले तो खुशामदीद सबको सेल्फी लाइफ के दूसरे सेशन में. Second session, right? Second, Yeah. And I think we're gonna wait just a little bit more. हम चाह रहे हैं कि थोड़े से और लोग आ जाएं. अगर तो आते हैं. Hi Maham, hope you're well. तो the ones in the live, I mean. Okay, cool. So we're gonna wait a bit, but if you guys have any tech related questions, do write them here, और हम उनके फिर आप लोगों को जवाब देते हैं. तो do send in your questions, whatever questions you may have. But थोड़ा सा I think let's talk about what we have planned कि हम आज किस चीज़ की बात करेंगे. Yeah, for sure. So Ibrahim has been a long time Apple user, and I think आज का हम टॉपिक भी इसके ऊपर करना चाह रहे थे, especially because अभी I think सितंबर में ही Apple is set to launch the iPhone 14 की सीरीज़, जिसमें this time हमारे पास I think 4 फ़ोन्स हैं और मिनी जो ऑप्शन है वो उन्होंने इस दफ़ा डिसकंटिन्यू कर दिया है. तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी जानेंगे इब्राहिम का, बिकॉज he used to be a Samsung user or an Android user as well. और फिर शिफ्ट हुआ and he went to Apple, and we can talk about कि ये डिसीजन उसने क्यों लिया. एंड उसके साथ साथ आप लोगों के भी अगर कोई सवाल हैं अबाउट एप्पल और iPhone's तो वो भी हम साथ साथ लेते रहेंगे. बट इब्राहिम, व्हाट डू यू थिंक, शुरू करें? I was hoping we could wait a little bit more, but I think चलो ठीक है. 6 लोग आ गए. 6 लोग आ गए हैं, I think. Yeah. So ठीक है, we can start. चलो, अरम ने ना काफ़ी अच्छा सा लेआउट कर दिया है what the agenda for today's live is, और it's wonderful. But like इससे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक. I mean it's 75th anniversary of Pakistan, and we're actually extremely lucky कि हम लोगों के पास एक अपना मुल्क है जिसको हम अपना घर कह सकते हैं, जिसके अंदर हम सेफ हैं, जो it's our home. And at the same time, like I understand कि कुछ लोग थोड़ा सा हालात से तंग हैं. टाइम्स आर डेफिनेटली टफ. बट अगर हम देखें कि हम 75 ईयर्स पहले किधर थे और हम आज किधर हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा प्रोग्रेस होती रहेगी. कुर्बानियाँ काटनी पड़ेंगी, थोड़ी आगे लंबा सफ़र है, लेकिन तरक्की की तरफ भी हमने जाना है. सो विद दैट सेड आई थिंक आई बिगिन पहले सवाल के साथ. तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना उस टाइम का बताएं जिस वक्त आप एंड्रॉयड प्रेफर किया करते थे, और क्या चीज़ थी जिसने आपको मतलब तरह से कंपेल किया कि आप अब एप्पल की तरफ स्विच करें. वजह क्या थी, क्योंकि मतलब वाज इट पीयर प्रेशर या क्या वजह थी कि आपने एप्पल पे एकदम से स्विच किया? अच्छा, तो ये बेसिकली द थिंग वाज कि मैं फ़ोन्स बहुत ज़्यादा चेंज करता था. हर 8-9 महीने बाद मुझे अपना फ़ोन पुराना लगने लग जाता था और मैं फ़ोन चेंज कर लेता था. तो दिस इज़ व्हेन आई वाज यूजिंग सैमसंग बैक इन द डे. तो अब उसके साथ इशू ये था कि ऑब्वियसली लाइक एक टाइम पे तो चलो ये ठीक ठाक कर सकते थे, और उस वक्त आप टॉकिंग अबाउट लाइक 2013, 14, 15 का टाइम, जब मिड रेंज फ़ोन्स वर इन, फ्लैगशिप्स भी कोई इतने महंगे नहीं थे, उस वक्त आपके लिए चेंज करना आसान होता था. खैर, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स रखे, एंड एंड्रॉयड मुझे बहुत पसंद था. उसकी कस्टमाइजेबिलिटी बहुत पसंद थी. गाने डाउनलोड कर लो, जो करना है, मूवीज़ देख लो, टॉरेंट कर लो, व्हाटएवर वर्क्स, राइट. Android was wonderful and it still is wonderful, but at the same time जैसे जैसे टाइम गुजरा और Netflix आया, Spotify आया, हमें टॉरेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Things just kind of like जो एडवांटेजेस मुझे लगती थी सैमसंग की हैं या एंड्रॉयड की हैं, वो मुझे उसके बाद मैंने कहा कि लाइक आई स्टॉप फीलिंग देम. लाइक आई वाज लाइक अच्छा ठीक है. बट माई मेन इशू विद एंड्रॉइड्स वॉज कि मैं उनको बहुत बुरी तरह से मेंटेन करता था, जिसकी वजह से ना वो फ़ोन साल बाद उसकी बैटरी भी बहुत जल्दी गिरने लग जाती थी. एंड इट वाज जस्ट ऑल इन ऑल लाइक I felt the need to change my phone after a year. अच्छा. तो
अब चीज़ें थोड़ा महंगाई की तरफ जा रही हैं. आई नो कि जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी साउंड करता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं और मैं और महंगा फ़ोन ले रहा हूँ, बट अब चीज़ें महंगाई की तरफ जा रही हैं. तो आई डिसाइडेड टू बी एन एप्पल यूज़र बिकॉज मैंने यही देखा था जिन लोगों के पास एप्पल्स हैं वो तो 4-4, 5-5 साल अपने फ़ोन चला रहे हैं. इनफैक्ट मैंने कभी साल से ऊपर कोई फ़ोन नहीं रखा और जब मैंने एप्पल लिया पहली बार वो मेरा तकरीबन 3.5-4 साल चला. और अब फिर एप्पल लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. और उसको भी मैंने अगले कुछ 3 साल तक तो चलाना है, 3-4 साल तक तो चलाना है. सो आई थिंक ऑल इन ऑल दैट. एंड सेकेंडली फिर मैं कुछ देर के लिए कॉलेज के लिए US चला गया था और वहाँ पे थोड़ा ये प्रेशर की चीज़ आ जाती है. सबके पास एप्पल था तो सारे, कोई व्हाट्सएप किसी के पास होता ही नहीं था. एवरीवन वुड कम्युनिकेट ऑन iMessages. So it just kind of made sense to make the switch, to fit in better, to be able to communicate with people better and stay connected. Yeah. हाँ, या आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने मतलब दिया है कि ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है. एंड ये वही आर्गुमेंट है कि या तो आप एक दफ़ा अच्छी चीज़ ले लो विच कैन लास्ट यू लॉन्गर, यू कैन पे द प्राइस फॉर इट शुरू में, या एक लो क्वालिटी चीज़ ले लो वही हर साल बदलते रहो तो उसमें आपका खर्चा लॉन्ग टर्म में उतना ही हो जाता है. बट लेट्स टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एप्पल. व्हाट वाज इट स्पेसिफिकली एप्पल के बारे में जो आपको सबसे पहले हिट किया कि कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल कैमरा क्वालिटी, आई थिंक मेरे लिए तो दैट इज़ अनमैच्ड जब आप एप्पल की बात करते हैं. आप अभी भी उनका iPhone 6 का निकालेंगे, आई थिंक वो बहुत से नए फ़ोन्स की भी क्वालिटी को बीट करेगा. तो व्हाट वाज इट फॉर यू दैट स्टूड आउट इनिशियली फीचर्स वाइज? So in terms of features, I think Apple actually features में बाकी फ़ोन से कम है. But what I like about Apple is unless they're sure of a tech, वो उसको रिलीज़ नहीं करते. जैसे Samsung is a wonderful company just by the way, but उन्होंने जब फोल्ड निकाला था तो आप लोगों को याद है किस तरह के मसले आना शुरू हो गए थे, स्क्रीन्स टूटने लग गई थी, क्रीजेस आने लग गई थी. Apple ने अभी तक नहीं निकाला कोई फोन. नोट का भी याद करो वो जो एक्सप्लोडिंग बैटरीज वाला. तो Apple का ये है कि they played safe और मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ रिस्क के वर्स होता गया. तो Apple just kind of started making more sense because it's definitely something कि मैं ले सकता हूँ. मुझे पता है कि 3-4 साल चलेगा. सॉफ्टवेयर अपडेट्स की सपोर्ट 5 साल तक की है. जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज एप्पल की सेकंड हैंड मार्केट अच्छी है. सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. कैमरा वाज डेफिनेटली अ फैक्टर, बट मोर इम्पोर्टेंटली एप्पल की चिप, because the software, the chip and the hardware all are designed by the same company. और ये इसका जो एडवांटेज है ना, बैटरी लाइफ भी अच्छी रहती है, फोन स्मूथ भी रहता है, गर्म भी नहीं होता और फंसता भी नहीं, हैंग भी नहीं होता. सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. With Samsung, for example, Google makes their software, Samsung makes their hardware, and then Snapdragon makes their chips. तो वो तीन different companies हैं, different countries में बैठी हुई हैं. उन तीनों की collaboration थोड़ी सी जब आप करते हो तो obviously they've done a wonderful job. By the way, the S22 Ultra is an absolutely amazing phone. और जब मैंने देखा था तो definitely मेरे दिल में थोड़ा सा एक आया था कि यार maybe I should have just gotten this. But I would rather just play it safe, and I think just the integration of everything that comes with this brand is what compelled me to go for it. बिल्कुल. और इसमें तुमने एक और आई थिंक इंटरेस्टिंग बात ये भी की है कि दे प्लेड सेफ विद द फीचर्स, एंड दैट डजंट नेसेसरली मीन कि वो इनोवेट नहीं कर रहे. इट्स मोर दैट वो अपने एंड यूजर का एक्सपीरियंस को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं. दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क विद disappointing the customer, and I think Samsung को इससे actually नुकसान हुआ है कि I mean having an exploding battery जहाँ for example वो फ़ोन फ्लाइट पे अलाउड नहीं था लेके जाना, वो एक बहुत it's an extreme inconvenience, let's just put it that way. तो और फिर फोल्ड के साथ भी जो मसाइल आए, like it was a great innovation but it was hasty as well, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि I mean I do not think at that point the world needed a fold phone necessarily. और शायद वो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते थे टेस्टिंग में टू बिफोर लाइक डूइंग अ पब्लिक लॉन्च. दूसरी चीज़ एप्पल की आपने ये मेंशन बहुत ज़रूरी की कि वो सारा कुछ खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. और इसका एक्चुअली आई वाज रीडिंग समथिंग अबाउट हाउ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इवन अदर एप्लीकेशंस में जब आप फोटोज़ लेते हैं उनसे, तो वो एक एप्पल के फ़ोन में उसकी कैमरा की या उस इमेज की क्वालिटी बेहतर आती है. और उसकी वजह ये है कि
जब ऐप डिजाइनर कुछ डिजाइन कर रहा होता है तो दे नो एग्जैक्टली व्हाट एन एप्पल कैमरा विल लुक लाइक, दे डोंट नो व्हाट एन एंड्रॉइड कैमरा विल बी। वो गूगल का भी हो सकता है, वो सैमसंग का भी हो सकता है, हुआवे का भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लस है। प्लस प्रोसेसिंग चिप्स जो अभी आई थिंक A15 यूज हो रही है इन द iPhone 13 A15 एंड तो चेक कर लेते हैं, इट इज A15 तो वो यूज की जा रही है एंड उसकी वजह से उनको बहुत अपर हैंड मिलता है इन अगेन द अमाउंट ऑफ वर्कलोड इट इज एबल टू मैनेज। लाइक कुछ लोग तो अब वीडियो एडिटिंग अपने आईफोन से डायरेक्टली कर सकते हैं। Of course, it's an extremely powerful phone। और जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगती है ना यार, मैं इतना जितना ज़्यादा यूज़ कर लूँ गर्म नहीं होता, गर्म बिल्कुल भी नहीं होता। जो यहाँ आई थिंक वैसे बहुत हमारे क्लाइमेट को देखते हैं। Yeah, and I think ये जो the thing that you mentioned about the cameras and app developers, that's actually like an amazing point because कभी आपने सोचा है कि like Snapchat इतना बुरा क्यों लगता है कुछ फ़ोनों पे और कुछ फ़ोनों पे इतना अच्छा क्यों लगता है? That's because when it comes to Android phones, there's so many different types of phones कि the way Snapchat works is कि कैमरा स्क्रीन पे शो कर रहा होता है कि आगे क्या आ रहा है and then the phone takes a screenshot of it. So every picture that you take on Snapchat is a screenshot on Androids. Whereas for Apple, for iPhones, क्योंकि उन्हें पता है कि यही 4 फोन है जिनके लिए हमने बनाना है, तो it's just a lot more easier, तो वो फिर कैमरा ही लेता है and that's why you'll see the difference in quality for like Snapchat or Instagram pictures for all these different phones. Yeah, that's really interesting. And हाँ again Apple के तमाम products आप देखें तो उनमें ये खासियत है कि they can work longer and they can work on under a lot more heavy weight than most phones just because वो सारा कुछ खुद प्रोड्यूस करते हैं। एंड आई थिंक ये एप्पल की फिलॉसफी हमेशा से रही है। दिस इज समथिंग व्हिच स्टीव जॉब्स कॉन्स्टेंटली एम्फसाइज्ड ऑन के यू नो एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट एंड यू नो आई हार्डली सी एप्पल गोइंग रॉन्ग व्हेन दे टॉकिंग अबाउट। हमारे कुछ कमेंट्स भी आए तो व्हाई डोंट वी let's address them. We can read them out for everyone. Do you feel it becomes, Rafe पूछ रहे हैं, do you feel it becomes a necessity to integrate oneself with the Apple ecosystem? Yeah. Very good question. अच्छा, so जहाँ तक ecosystem concerned है, yes, कभी कभार you do feel that way, कभी कभार you don't. For example, like it's actually quite easy to have like a non-Apple laptop, have like any Windows laptop, and then have an Apple phone. It's also very easy to have a MacBook and then not have an iPhone. I've seen so many people do that. So it's not like it's not an absolute necessity, but at the same time, when you have all things Apple, like it does definitely make your life easier. It's definitely easier. जैसे अब मुझे अपनी calls, texts की सारी नोटिफिकेशंस अपने लैपटॉप पे आ जाती हैं। अगर मैं अपने फ़ोन से कोई पिक्चर लूँ ऑलरेडी विदाउट मी सेइंग एनीथिंग लाइक मेरे लैपटॉप पे आ जाता है। मेरे फ़ोन का जो नोट्स ऐप है उसके अंदर भी मेरा जो लैपटॉप का नोट्स ऐप है सिंक रहता है। सो आई मीन इट्स डेफिनेटली लाइक अ मेजर प्लस पॉइंट। बट अगर आपको एप्पल का आईफोन बहुत पसंद है और आपको मैकबुक बिल्कुल नहीं पसंद, सो इट्स परफेक्टली फाइन एज वेल टू like have all these different products. I mean, I had an Apple Watch, but right now I don't. I have this Huawei watch and it works perfectly fine for me as well. मुझे सारी notifications आ रही हैं, मेरा सारा like workout वगैरह इसमें sync हो रहा है phone के साथ. So I mean at the same time like yeah, an Apple Watch would have been easier, but और earpods भी नहीं use करते तो? Yeah, I don't even use AirPods. Yeah. So I mean these things will just make it easier. It'll make your life more convenient and smooth. But at the same time, I don't think कि इतना ज़्यादा फर्क कोई पड़ेगा. Necessity नहीं है. It's not really a necessity. ठीक. शश का है कह लो। हाँ बिल्कुल। एक और सवाल आया है इलाही हसीब से। Any other company you guys think are great, have great phones and can compete with Apple or Samsung in the future? Yeah, पहली बात तो the Nothing phone is amazing. The Nothing phone? Yeah, the Nothing phone. Achha, I haven't heard of that. No, I'll show you the phone. It's amazing. People are calling it Nothing Phone 1 basically, and people are calling it the iPhone of Android. But obviously अभी ये Apple को नहीं compete करेगा because their phones aren't really that their phones aren't Masses really that में like नहीं हाँ पहुंचे अभी I think they're around like $400-500 अभी $1,000 के mark पे नहीं आया, but this is what it looks like. It kind of viewers को भी दिखाने की कोशिश करें. So I don't know if you guys can see. So this is what the phone looks like. Nothing phone. This is a startup. एक OnePlus के X
फाउंडर थे या मैनेजमेंट में थे, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी एंड अभी के लिए तो लाइक दिस फोन इज़ doing really well, but let's see if this company can do something. At the same time, I think Xiaomi is doing really well. Xiaomi तो is just an absolutely wonderful brand, और उनकी इतनी ज़्यादा products हैं with their headphones and their watches and everything कि उनका भी अपना एक अच्छा ecosystem बनता जा रहा है. There's Xiaomi as well. OnePlus is a pretty good brand. So all these Chinese brands जिनको शुरू में लोग घास नहीं डालते थे अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं. But if I were to choose one brand that I think it's the most promising out of the three that I just mentioned, I'd say it's Xiaomi. और उनके Xiaomi के stores देखो ना, they also kind of replicate Apple stores with their minimalistic white look and everything. और उनका ecosystem का भी सही जा रहा है. तो I think Xiaomi, अभी तो Xiaomi सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं ना वो Samsung को कर रहा है. But I think it's definitely going to be causing problems for Apple. Yeah, I think अभी खैर वो उस प्राइस रेंज में आए नहीं है, बट या इवेंचुअली शायद उनके लॉन्ग टर्म प्लान में ये हो. लेट्स सी अगर कोई और सवाल थे. नहीं, दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन. Guys, I think we should just kind of be nice to each other in the comments. We're all like fellow country people and आज वैसी जश्न आज़ादी है, so let's try to keep the bullying to the minimum. Yeah. Do you have any other questions? So I actually have a question. Okay. Similarly, मतलब जिस तरह से तुमने Xiaomi का भी mention किया है, again, don't you think ये थोड़ा सा, like you're saying, Xiaomi is also kind of replicating what Apple's doing, and I think that in itself is a kind of an issue that a lot of brands will try to replicate what something like Apple has done, but Apple in itself वो एक इतना क्या कहते हैं कि उनका अपना एक इतना डिफरेंट विजन है which other brands cannot see. They can replicate once it's done, but essentially वो हमेशा इस चीज़ में पीछे रहेंगे. Let's like that's one way to put it. तो या मेरा भी यही ख्याल है कि again they can, and Samsung can try all it wants to try to beat the iPhone, but we always find that the iPhone or Apple generally has never felt threatened by Samsung as such. Like उनके fold आने से या उनके किसी नए device आने से Apple hasn't like gone into a panic and been like, okay, we need to make something like that. Because Apple has a cult following if you think about it. Apple एक brand है और जिन लोगों ने Apple use किया हुआ है बहुत कम लोग हैं जो Apple से defect करते हैं किसी और brand पे from what I've seen. But जो एक दफ़ा ले लेते हैं वो फिर अगर उनके पास पैसे ना हो तो वो 2-3-4 साल अपना फ़ोन चला लेंगे, but they'll definitely go for an Apple in the future. This is something that I've noticed. और एक cult following है. They've kind of made this image of perfection and luxury, and I think that and reliability most of all. So I think all these things combined, people just kind of have this relationship with the brand where they feel कि like हमने तो यही लेना है बस. बिल्कुल. तो I think Apple को जो सबसे बड़ी advantage है वो it's not their integration. It's पहली बात तो it's their of course closed loop ecosystem, but at the same time सबसे बड़ी उनको advantage है it's their brand loyalty. So many people in the US, for them, these other brands, these other phones, they just don't exist. जब वो phone का decision ले रहे होते हैं, they're comparing the 4 or 5 iPhone models for sale at that time. वो अपनी price range उधर से करते हैं. अब तो Apple अपने पुराने phones भी बेच रहा है, जिस तरह iPhone 11 आपको brand new मिल सकता है. अब तो वो $300 से लेके $1500-1600 तक की range में. So wherever you lie in that price range, अब आप phone ले सकते हो. वो भी masses में पहुंचना चाहते हैं. Just by the way, हमने prices की बात की है. Price की बात की है ना, so I just wanted to clarify, like I just wanted to let you guys know something. So because of some political problems in the world, we're not going to be pointing any fingers at anyone, but because of some problems, Apple की ना chips का थोड़ा सा issue हो रहा है. अच्छा, अब वो chips I think पहले US जाएंगी फिर China जाएंगी, जो भी है. The point is that the iPhone 14 Pro models, both Pro and Pro Max, are going to be starting at $100 more. So the Pro will start at $1,100 and Pro Max will start at $1,200 rather than $1,000 and $1,100. But it's again, I don't feel it's the end of the world because अगर आपको याद हो iPhone X जो आया था 10, that started at $1,000 actually. ठीक है, और iPhone 10s, 11, 12, 13 सारे हज़ार पे रहे for like these 5 years. So I mean a price increase was overdue. And if you consider like what the 13 Pro offers versus what the 10 offered, like if you make that comparison, like I mean and the rising costs and supply chain issues and the price of oil, जो कि आजकल वैसे तो कम हुई है, but with its
like volatility and all that. So I think that's definitely like a factor. So ये phones अब $100 ऊपर होंगे. अब वो जो 14 के models हैं, we're not too sure about that. अच्छा, एक और चीज़, speculations के मुताबिक जो 14 models हैं, not the Pro ones, just the 14s, they're going to have a notch just like this. But the Pro models will not have a notch. They'll have like the hole punch cut out for the camera and then just like a little line for the speaker. So we're kind of excited to see that, to get some screen real estate back. So yeah, we're just kind of excited for the Apple event. और just by the way guys, Apple event के बाद भी हम लोग लाइव जाएंगे. Definitely. उसके एक दफा हम टाइम कंफर्म कर लें तो उसके बाद हम will definitely be going live. अभी तक मैंने सुना it will be like September 24th maybe. Yeah, जब it's far off but definitely करेंगे. Yeah. लेकिन मैं बस एक observation share करना चाहता हूँ with iPhone in Pakistan at least. बहुत से जो content creators हैं, in fact be it TikTokers या YouTubers, उन्होंने भी like they've also even decided to switch to the iPhone because उससे आप कुछ भी बना सकते हो because the camera quality is so good. हमने recently एक article भी publish किया था on the speculations या जो leaks हुए हैं iPhone 14 के ऊपर, तो उसमें मैंने ये mention भी किया था कि कुछ एक पिछले साल ही एक गाना रिलीज हुआ था अब्दुल्ला सिद्दीकी और मीशा शफी का, Magenta Cyan, and they recorded the video on an iPhone, the music video for it on an iPhone. और आप बिल्कुल फर्क नहीं बता सकते कि ये शूट किसके ऊपर हुआ है या मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी थी. तो इस तरह के रिव्यू आईफोन पे किया था, जो भी एक रिव्यू जो किया था जो आप देख सकते हैं, और एक अभी जो हमारा आ रहा है, दोनों आईफोन पे है ना, they felt absolutely wonderful. like कोई जरा प्रोफेशनल कैमरा वाली it's definitely that. And I think another reason is definitely this fact that it's a status symbol, right? Like it is a luxury product, so that's another reason why it's popular. और ये जो luxury product है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको ये है कि इसकी second hand market बहुत अच्छी है. It's a wonderful second hand market. Definitely. तो if you are the kind of person जो कहता है मैंने हर साल फ़ोन चेंज करना है, तो आप अगर अभी अपना 13 Pro Max बेचने जाएं तो आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी उसकी, और आपको फिर थोड़े से पैसे ऊपर डाल के 14 मिल जाएगा. So I mean the second hand market definitely does definitely is pretty good on this phone. इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है. आप प्यार से रखो. बैटरी हेल्थ, जिस पे हमने बाय द वे एक लाइव सेशन करना है कि अपनी बैटरी हेल्थ कैसे सही रखो. बिल्कुल हमने बट अगर आप अपनी बैटरी हेल्थ सही रखो, मेरे फ़ोन को अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 months और अभी तक 100% पे. तो इफ़ यू कीप योर बैटरी हेल्थ एंड एवरीथिंग फाइन, लाइक इस फ़ोन की डेफिनेटली एक अच्छी रीसेल है. तो ये भी एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है. हाँ, आई थिंक वैसे भी आजकल जिस तरफ इकोनॉमी जा रही है, इस तरह के हमें टिप्स की जरूरत है कि आप अपने फोन की लाइफ को भी किस तरह से बढ़ा सकते हैं. अपनी फ़ोन की लाइफ एक्सटेंड करें, अपनी प्रोडक्ट्स की लाइफ एक्सटेंड करें, अपनी चीज़ों की, बिकॉज आई मीन लाइक it'll save you money, it'll save like environment के लिए भी अच्छा होगा. Are there any other questions from the people? हाँ, तो राफे ने एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि वो कुछ फीचर्स में they're kind of slow to get on it because वो इतना वो इंश्योर करना चाहते हैं कि फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल he said कि the 120 Hz became the standard whereas the iPhone 12 was still running on a 60 Hz screen. Yeah, okay, I'll acknowledge that. Same thing with the notch. Yeah, Maham also agrees that artists community में भी ये बहुत मशहूर हो गया iPhone यूज़ करना because of good aesthetic, camera quality and so on. Okay, wait. I just see a wonderful question here from Rafi981. An interesting question I have is related to the plateau that technology seems to be coming to. That's definitely very true. iPhone 11 Pro पीछे से काफ़ी सिमिलर था इस फ़ोन के. 12 भी, 13 तो बिल्कुल भी 12 के सिमिलर था, और जो 14 आ रहा है वो भी इसी तरह का एक स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप्ड होगा, और उसके अंदर भी कैमरा का बम्प थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, नॉच हटा देंगे. दैट्स प्रीटी मच इट. टेक्नोलॉजी डेफिनेटली थोड़ा सा एक प्लेटू पे आ गई है. डेफिनेटली we're not disagreeing with that. But at the same time I think हम लोगों की दुनिया इतनी फास्ट पेस्ड है, हर साल नया फ़ोन आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए हमें लगता है कि प्लेटू पे आ गई है. ठीक है, बट आप 5 साल पहले अगर जाओ, iPhone 10 को कंपेयर करो इस फ़ोन से, iPhone 10 की बैटरी लाइफ वाज हॉरिबल कंपेयर्ड टू दिस. द कैमरा वाज ग्रेट बट इट वाज हॉरिबल कंपेयर्ड टू दिस, एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी जस्ट कुड नॉट मैच दिस फ़ोन. तो आई थिंक एक प्लेटू तो आ गया है, बट
वो तब आया है अगर आप हर साल एक नया फ़ोन लेना चाहो या नई टेक लेने चाहो, अगर आप 2-3 साल के इंटरवल्स के साथ करो तो you're definitely going to see a difference. But no doubt पहले अगर आप याद करो जब स्मार्टफोन्स आ रहे थे तो कितनी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, बट उस वक्त स्मार्टफोन्स वर एक्सट्रीमली इम्परफेक्ट. तो हर कंपनी को ना बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती थी. जब उनका फ़ोन मार्केट में जाता था, ये भी मसला है, वो भी मसला है, अगली बार वो ठीक करते थे, फिर 100 मसले निकल आते थे, फिर अगली बार वो ठीक करते थे. इसलिए हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा जंप है. अब इस फॉर्म को इन्होंने काइंड ऑफ परफेक्ट कर लिया है. सो आई थिंक व्हाट्स गोना हैपन इज के अभी तक तो प्लेटू करेगा, यस, बट इवेंचुअली आई थिंक फ़ोन ऐसे ही रहेंगे. जो लीप्स आएंगे वो डिफरेंट तरह के टेक्स्ट में आएंगे, इन माय ओपिनियन. I don't think we don't have any more questions. लेकिन किसी ने तारीफ की है कि आपने वाइट शलवार कमीज पहनी है और पीछे एक ग्रीन पेंटिंग है, तो वो कह रहे हैं that is a symbol of the Pakistani flag. Yeah, definitely, and at the same time my wallpaper is also green. Just because क्योंकि देखो अच्छा लगता है. अगर आप यहाँ देखो तो 14th August लिखा हुआ है यहाँ पे और ग्रीन भी है पीछे. It's just a good vibe. Of course it's a symbol and क्योंकि ऑनेस्टली लाइक हमें अपने मुल्क से भी प्यार करना चाहिए, हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए. एंड एज आई सेड बिफोर चीज़ें थोड़ा सा लाइक लगती हैं ब्लीक, बट इंशाल्लाह जब आप दूर से कभी देखेंगे ना रेट्रोस्पेक्ट के अंदर तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ ही जाती हैं. अभी रिसेंटली हमने ऑफिस के लिए कुछ फ़ोन्स मंगवाए थे, अगर आपको याद हो सैमसंग के, तो उनके पीछे मुझे इतना अच्छा लगा देख के लिखा था मेड इन पाकिस्तान. ठीक है, अब हमारे आहिस्ता आहिस्ता फोन्स लोकल मार्केट को पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ही जाएंगे. जब लोकल मार्केट के अंदर ये सक्सेसफुल होंगे तो फिर ये एक्सपोर्ट होंगे. देयर सो मेनी एक्सपोर्ट मार्केट्स आउट देयर. देयर द गल्फ कंट्रीज, देयर इज अफ्रीका एज वेल. इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारे अंदर. तो आई मीन इन द स्टार्ट या इट सीम्स टफ बट लाइक वी आर स्लोली, यू नो. पहले कहाँ फ़ोन बनता था पाकिस्तान में, आप कितने बनते हैं. तो आई मीन इट्स डेफिनेटली लाइक आई थिंक वी आर इन द right direction. Albeit a little slowly, but हम लोग as a country कभी भी आगे नहीं जाएंगे unless we all work together and unless we work hard and we do whatever we do with extreme sincerity. Okay जी, मेरे ख्याल से that's a good note to end on. Thank you जिन ने देखा. Everyone who watched and everyone who engaged with us, we just really appreciate you guys. Do follow us, and if you guys ever need anything tech within 3 days for the best prices, you know where to come. And free delivery. Oh yeah. you know where to come. And इंशाल्लाह हम लोग एक buy now pay later कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी सर्विस आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी. तो just stay in touch, and if you guys have any questions ever, just message us. Just DM us. Like don't feel like अच्छा hesitate. Don't hesitate. We'll reply as soon as we can. और आप लोगों को जो questions हो, जो queries हो आपकी, please do send us a message. बिल्कुल. और हमारे ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, वो भी पढ़ें, उसके ऊपर भी अपने ख्यालात दें. बट बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका आने का भी, और इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी. ख्याल रखें एंड कीप फॉलोइंग सेल्फी. खुदा हाफिज़.